हेलो नमस्कार वणक्कम मेरा नाम है सुधीर एंड यू आर वाचिंग सीबीएसई विद सुधीर. Let's do the final part of chapter 4 of your maths Ganita Prakash for class 7 students. This is 4.5. We start with pick patterns and reveal relationships. Let me also say that when I actually prepare each and every part, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि मैं लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को टारगेट करूं. मेरा मतलब है ये कि सबसे कमजोर स्टूडेंट जो रहेगा क्लास में उसको टारगेट करके मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं. मैं कोई हाई फाई, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कभी करता नहीं हूं, लेकिन मैंने एक दो वीडियोस देखे और मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगा अगर कोई कमजोर स्टूडेंट है तो उसको सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक या कोई रेफरेंस बुक से पढ़ाने में यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू द स्टूडेंट, बिकॉज कई बातें बहुत ही फंडामेंटल लेवल पर सिखानी पड़ती हैं बच्चों को. और मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है, वेदर इट इज मैथ्स, साइंस इन पर्टिकुलर, दीज टू सब्जेक्ट्स इन पर्टिकुलर, जब मैं सिविक्स पढ़ाता हूं उस पर ज्यादा ध्यान देता हूं, इवन ज्योग्राफी टू एन एक्सटेंट. लैंग्वेजेस अलग है, उसमें भी मैं काफी डिटेल में जाता हूं ताकि बच्चों को एक तरह से लिटरेचर और साहित्य में मजा भी आए. लेकिन जहां तक मैथ्स का सवाल है और साइंस का, इसमें मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि try to target the weakest student in the class. So okay, so that is my effort and I hope I'll be successful in this effort because हर चैप्टर को मैं इसी नजरिए से करता हूं. तो let's start with in the first section. I hope आपने पहले के वीडियोस देख लिए हैं. In the first section we got a glimpse of algebraic expressions and how to use them to describe simple patterns and relationships in concise and elegant manner. Okay, now let's look at some kind of formula detective. तो इस तस्वीर को देखिए. प्लीज कीप अ नोटबुक विद यू, पेन विद यू एंड योर टेक्स्ट बुक विद यू. ओके, प्लीज कीप सॉल्विंग अलोंग विद मी, क्योंकि जब तक आप मैथ्स को खुद सॉल्व नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा. ओके, नाउ इस पर्टिकुलर पिक्चर को देखते हैं. यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर 5 है, यहां पर 2 है और यहां पर 8 है. आपको ये पता करना है कि इन तीनों के बीच में रिश्ता क्या है. ये रिश्ता क्या कहलाता है. ओके, बेसिकली यही फंडा है, वो सीरियल है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसी के बारे में हमको एक फॉर्मूले से बताना है. सो द फॉर्मूला फॉर दिस इज दैट the 2 times the first number, that is 5 into 2 10, 10 minus 2 is equal to 8. That is the connection. ये रिश्ता है इन तीनों नंबर्स का. ओके, सो इसका मतलब ये हुआ that 2a, if this is a and this is b, so 2a minus b equals to the final number, let's call it x. Okay, so the formula is 2a minus b. यहां पर देखें 2a यानी कि 8 into 2 16 minus 1 equals 15. Great. 9 into 2 18. Okay, 9 into 2 18 minus 11 equals 7. Great. 10 into 2 20. 20 minus 10 10 equals 10. 6 into 2 equals 12. 12 minus 4 is 12 minus 4 is 8. So this will be 8 out here, right? Let's go ahead. Okay, ये वाला देखते हैं. Find the formulas for the number machines below and write the expressions for each set of inputs. Okay, 5 into 5, 2 and 5. अब ये नहीं कि हर बारी 2a minus b होगा, वो नहीं है. So what is the connection out here? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 5, okay, plus 2, 5 plus 2, 5 और इसको करें तो कितना आता है 7, और फिर इसको माइनस करें तो यू आर गेटिंग द सेम नंबर, यानी कि 7 minus 2 5. तो इसका व्हाट विल बी द फॉर्मूला? a plus b, that is a plus b minus a plus b minus 2 equals the final number. अब यहां पर देखें whether it is fitting in. a plus b ये हो गया 8 plus 1 यानी कि 9. 9 minus 2 equals 7. तो ये वाला 2 is a constant, not this 2 but 2. अब 9 plus 11 20. 20 minus 2 equals 18, right? 10 plus 10 20 minus 2 equals 18. अब यहां पर a plus b minus 2, that is a plus b minus 2 equals the final number. Okay, so this is the final formula. अब next वाला देखते हैं 4 1 और 5. अब इसको कैसे करेंगे, right? तो इसमें ऐसा होगा 4 into 1
right? You have to see the connection. और ये जितना ज़्यादा practice करेंगे, you will get better at it. 4 into 1 plus 1, right? 4 into 1 plus 1. 4 into 1 plus 1 equals 5. Similarly, 6 into 0, 0 plus 1 equals 1. 3 into 2, 6 plus 1 equals 7. 10 into 3, 30 plus 1 equals 31, right? यहां पर वही फॉर्मूला हो गया a plus b, a plus a into b plus 1 is the formula. Now make a formula of your own. This is something which you can do. Now algebraic expressions to describe patterns. Example 12. Now यहाँ पर कुछ रंगोलीज बनी हुई हैं. Okay. Now if you see the pattern और इसके ऊपर आपके figure it out के some questions are there which I must warn you right in advance. They are a little complicated. So please understand this carefully because on the basis of this you will certainly get questions in both your half yearly as well as your final examination. So ये A है, ये दूसरा रंगोली है, ये तीसरा रंगोली है. Let's imagine these are the three things which have been made. So this is getting repeated here, this is getting repeated here, this is getting repeated here. So there is a repetitive pattern. Okay. So Somjit wonders if there is a way to describe all the positions where the design A occurs, design B occurs, and design C occurs. Okay. So that is what has to be found out. So let us start with design C. I'm keeping the book open in front of me here. So design C, जहां पर appear हो रहा है. Okay, let's start with design C. It appears for the first time at 3, then 6, then it will be 3, 6, 9, 12, etc. Right? So that is the pattern. Where would design C appear for the nth time? Okay. Where would design C appear for the nth time? We can see that this design appears in positions that are multiples of n. So the nth occurrence of design C will be 3 into n, right? So 3 into n will be the where it will appear for the nth time. Similarly, find the formula that gives a position where the other designs appear for the nth time. Position where B appears. Now B is important because it is 1 less than C, right? C is 3n, 3 ka multiples hai, 3, 6, 9. The second position is not, it's 2, 5, 8, 11 kind of thing, right? So 2, 5, 8, 11. Now these are not multiples of 2 or any other number, right? So then it will mean 3n minus 1. That is 3, the third position, and then you minus 1 from that, subtract 1 from that, you get the position of design B, the Rangoli design B. Design A will be 3n minus 2 because you move back 2 positions. I hope you have understood this because this is a very fundamental thing. As I said, questions आएंगे, इसको समझ लेना जरूरी है. And when we do those questions, question number 12, 13, 14, in the final figure it out, you will understand why I'm saying this because they are a little complicated and I'm going to make it very simple for you that you will never make a mistake. Okay. Now, given a position number, can we find out the design that appears there? Which design appears at position 122? Okay. Similarly, they have asked, so position 122 may, if the position is a multiple of 3, that is what you have to first see. Then clearly we have design C. So if 122, if it is divided by 3, it is 41. That means it will be at position number 41, right? So because it is clearly divided by 3, right? But if it is, let's say 40, 40 means it is 1 less than 3. So then it will mean 3n minus 1. So it will be design B. अगर ये 39 होता, okay, divide करके अगर ये 39 पर पहुंचता, then it will be design A because it will be 3n minus 2. I hope this is clear. Okay. Now, 99 is divided by, आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में positions 99, 122 and 148, right? So 99 is clearly divided by 3. So it becomes 33. So that means there is no remainder. So this will be design C, right? Then 122 is coming to 40. 40 is what? 40 is 3n minus 1. So it will be design number B. That is the, design A. Sorry, design B. Design B.
Then 148 is giving us 49. So it will be 3n minus 2, right? So then it will be design A, right? So design A will be the first one, right? 148. जैसे इसको 148, for those of you who are not understanding, 3 4 12 ओके 28, तो ये होता है 49, यानी कि एक 27 पे करेंगे, सो 1 इज रिमाइंडर out here, right? Patterns in a calendar. Now, this is going to be very interesting, and I would want you to take out the calendar from your wall and just put it in front of you so that you will understand it clearly. Now, if you see the calendar, now this is for November 2024. Now, November 2024 में इस तरह से और यहाँ पर 6 grids को एक तरह से मार्क कर दिया है. तो यहाँ पर अगर आप देखें 12, 13, 14, 19, 20, 21. So what you have seen, ये 14 और 21 को छोड़ दो, 12, 13, 19, 20. So what you are seeing is that let's take the thing, the numbers, so and find their sums. 12 plus 20, 12 plus 20 करेंगे, so you get what? 32, right? Similarly, 19 plus 13 करेंगे, you again get 32. So that means they are equal, and they are always equal. Like for example, let's do this one: 4, 5, 11, 12. 4 plus 12 is 16. 5 plus 11 is also 16. So always in a square, the diagonal sides will be absolutely equal. Okay, will the diagonal sums be equal in every 2 by 2 square in this endless grid? We have already seen that. To be sure of this, we cannot check with all the 2 by 2 squares. So let us consider a 2 by 2 square. Its top left number can be any number. Let's call it A, right? So given that we know that the top left number, how do we find the other number? So this one is A. How do we know what is the next one? So the number next to it will be A plus 1, because if this is 7, this will be 8 in a calendar, right? So it is A plus 1. So this one after that, okay, A plus 1, this one will be A plus 7 the next week, right? This is, if this is week 1, this will be week 2, so this will be definitely 7 days later. So it will be A plus 1, A plus 7, this will be A plus 8. So this way you can find out the remaining 3 squares also. So A plus A plus 1 plus A plus 7 plus A plus 8, right? So if we total everything, right? So whether we need to see whether it's always working. So we total A plus A plus 8, A plus A plus 8, right? इस साइड क्या हुआ? A plus 1 plus A plus 1, A plus 7. ओके, सो पहला वाला है 2A plus 8, दूसरा वाला ये A और ये A, 2A, 1 plus 7, 2A plus 8. So 2A plus 8 and 2A plus 8 both are equal. Okay. Now verify this expression for diagonal sums by considering any 2 by 2 square, just like I showed you just now. तो यहां पर देखते हैं, consider a set of numbers from the calendar having endless rows forming under the following shape. So this is a typical calendar, उसका एक grid लिया हुआ है, right? तो यहां पर देखना है, find the sum of all numbers, compare it with the number in the center. Repeat this for another set of numbers that forms a shape. What do you observe? So what we really see is that when you are adding 8 plus 14 plus 15 plus 16 plus 22, this total comes to 75. 75 is 5 times that of the number at the center, यानी कि 15. यानी कि 15 को 5 गुना आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 75 मिलता है, 75 मिलता है, right? So that is what is the formula whenever we are looking at. I'm looking at the calendar right now at the center. So I'm just taking this thing. 10 बीच में 17 है, okay? Let's take a more round number so it's easy. बीच में 10 है, okay? ऊपर 3 है, इस साइड 9 है, 11 है, 17 है. So let me see, 3 plus 9 plus 10 plus 11 plus 17. Okay, तो ये हो गया 20, ये हो गया 20, ये हो गया 10. So ये हो गया 50. बीच में कौन सा है? 10. 10 into 5, 50. Perfect. Okay, so immediately looking at the calendar on my wall, I am able to gauge this. So find another numbers, consider the same thing. So if you do it with any other numbers on the calendar, you will be able to find that it is perfectly, absolutely the same.
ओके, एक और लेना है एग्जांपल, यहाँ पर मैंने जो लिखा है यहाँ पे 13, ओके 13, यहाँ पर एक बॉक्स, यहाँ पर एक बॉक्स, यहाँ पर एक बॉक्स, यहाँ पर एक बॉक्स। सो 13 के आगे ये होगा 20, ये होगा 20, 19, 21 और ये हो जाएगा 27। इन पांचों को आप ऐड करेंगे आपको मिलता है 100, यानी कि 20 इंटू 5। ओके, नाउ लेट्स लुक एट सम मैचस्टिक पैटर्न्स। मैचस्टिक पैटर्न्स में now this is going to get a little more complex, so please pay attention। तो ये हो गया 1 2 3 4। तो यहां पर you are using 3 matchsticks। यहां पर how many matchsticks you are using? You are using 5। ओके, ये कॉमन आ रहा है, तो यहां पर 1 2 3 4 5। ओके, सो you are using 5 matchsticks। इसमें कितने? 3 plus 3 6 plus 1 7, right? So you are using different kinds of matchsticks for each one of them, right? So how many are there? So what you need, we can see that step 1 has 1 triangle, step 2 has 2 triangles, step 3 has 3 triangles, step 4 has 1 2 3 4 triangles. Can you tell how many matchsticks there will be in the next step, step 5? It is 11. You can also draw this and see how many matchsticks will be there in 33, 84 and step number 108. Of course इसको हम draw करके देख सकते हैं, but that will be a very time consuming task। तो इसको करने का तरीका क्या है? एक मिनट। तो इसको करने का तरीका क्या है? ओके, बिकॉज आई हैव रिटन इट इन डिफरेंट नोटबुक्स। सो इसको अगर आप देखेंगे कि स्टेप नंबर 1 में 3 मैचस्टिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, 2 के लिए 5 का, 3 के लिए 7 4 9 5 11 6 13 etc. So think of this in some way that how many matchsticks will be used in step number 33 without having to do the same thing. So what you do is just say step number 1 में 3, 2 में 5, that is 3 plus 2. Okay, 3 में 7 यानी कि 3 plus 2 plus 2. So every time you're increasing it by 2 matchsticks. That is what is the thing. So step number, the number of matchsticks needed to make a 33 triangles will be 3 plus 33 minus 1. Okay, 33 minus 1 into 2. That is 33 minus 1 into 2. So this will be 3 plus 32 into 2. Okay, this will give you the final thing, and similarly you have to do for step number 84 and step number 84 and step number 108 as well. Okay, so what could be an expression describing the rule formula to find out the number of matchsticks at any step? So what you do, the number of in step 10, 9 twos are required and an added 3. That is 3 plus 2 into 9. Okay, 9 kaise aaya? 10 minus 1. Okay, gives the number of matchsticks. In step 11, 10 twos and an added 3. That is 3 plus 10 into 2. 10 comes by 11 minus 1. Gives the number of matchsticks. For step Y, what is the expression? So step Y ke liye, the expression will be 3 plus Y minus 1 into 2. So this way. Okay. This expression gives the number of matchsticks in step 5. Now we can find out the number of matchsticks at any step quickly. You might have already noticed that there is a 2 in the first step also. So 3 equals 1 plus 2. Using this expression, we get 2y plus 1. How do you get this? Because this one is 3 plus 2 into y, 2y, okay, minus 2. Okay, 2 minus, इसको multiply करेंगे, minus 2, right? So this will become 3 minus 2, 1. So 2y plus 1. So this is what you are getting out here. Okay. तो इसको simplify करने का, instead of this, you can actually write it like 2y plus 1. So does the above expression also gives the number of total matchsticks at each step correctly? तो इसको simplify करने का 3 plus 2 into y minus 1 equals 3 pi thing and 2y plus 1 जो मैंने अभी किया. Both expressions are the same. There is a different way to count or see the pattern. Let's take a look at the picture again. Matchsticks are placed in 2 orientations, that is horizontal at the top and bottom. Okay, यानी कि this
and this is called horizontal. Okay, ये horizontal है और इसको कहेंगे हम diagonal, right? And the ones placed in the middle. For example, in step 2, ये वाला जो step 2 है, there are two matchsticks placed horizontally, यानी कि this one and this one, and there are three matchsticks placed diagonally, that is this, this, and this. Okay, what are these numbers in step 3 and step 4? So step 3 में what will happen is that there will be three matchsticks which are placed horizontally, 1, 2, and 3. Okay, diagonally कितना है? 1, 2, 3, and 4. Okay, diagonally will be step 4. In step 4, that is, if you do one more and make 4 triangles, it will be 4 matchsticks which will be placed horizontally and 5 will be placed diagonally, right? So it will increase by 1. So iska what will be the thing? How does the number of matchsticks change in each orientation as the steps increase? Write an expression for the number of matchsticks at step 5 of each orientation. Do the two expressions add up to 2y plus 1. तो हमको ये देखना है कि क्या ये दोनों मैच होते हैं या नहीं. ओके, तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूं. So it is like in the horizontal thing, for the horizontal thing, you are having 1, 2, 3, 4, right? So diagonal, we have always seen that it is one more, right? So it will be the corresponding, it is 2, 3, 4, 5. तो यानी कि जो general ये है, तो it is n plus 1 extra step, right? So similarly, so for the number of matchsticks placed horizontally will be y. So the second one will be the second one will be y plus 1. So that means it becomes 2y plus 1, right? It is the same thing which we are talking about out here, 2y plus 1. Now let's come to the 14 figure it out wale questions. Okay, these are the important ones which we need to look at. Book में भी खोल लेता हूं so that दिक्कत नहीं होनी चाहिए. Okay, तो पहला है, one plate of jawar roti costs 30 rupees and one plate of pulav costs 20 rupees. Okay, so if x plates of jawar roti and y plates of pulav, jawar roti pasand hai, I am not very fond of it, my wife loves it, and y plates of pulav were ordered in a day, which expression describes the total amount in rupees earned that day? तो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ क्या है, मैं यहाँ पे बुक से देख लेता हूँ so that it's easy. So jawar roti, it's costing 30 rupees. तो अगर x is jawar roti तो और उसका 30 rupees है, तो ये हो जाएगा आपका 30x. And one plate of pulav cost 20 rupees. So अगर उसको y में करेंगे, उसका cost है 20, तो ये हो गया. तो total amount पूछना है. So this is option number A, 30x plus 20y. Is this easy? Understood? दूसरा, पुष्पिता sells 2 types of flowers on Independence Day, champak and marigold. P customers only bought champak, Q customers only bought marigold, and R customers, they bought both. Okay, P ने सिर्फ चंपक खरीदे, फूल खरीदे, Q ने मैरीगोल्ड खरीदे यानी कि गेंदे के फूल, और R customers ने दोनों के दोनों खरीदे. Okay, और same day she also gave a national flag to every customer. Okay, because August 15 है. So how many flags would she have sold that day? तो ये है. तो यहां पर हमको क्या करना है? It's quite simple, because P customers को दिए हैं, Q customers को भी दिए हैं, और R customers वो हैं जिन्होंने कि दोनों खरीदे हैं, right? वो P और Q दोनों में नहीं आते हैं. तो सिंपल सा फॉर्मूला है P plus Q plus R. ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन. A snail is trying to climb along the wall of a deep well. During the day, it climbs up. During the day, it climbs up. So during the day, it climbs up u centimeter, and during the night, it slips down d centimeter. यानी कि u centimeter ऊपर जाता है, लेकिन नीचे d सेंटीमीटर स्लिप भी हो जाता है. और ये 10 दिन और 10 रातों के लिए यही सिलसिला चलता रहता है. The same thing happens for 10 days and 10 nights.
So you need to write an expression describing how far away the snail is from its starting position. Okay, तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, बुक को खोल के रख लेता हूँ. Write an expression describing how far away the snail is from the starting position. So during the daytime, the snail is climbing up u centimeter. Okay, during the night, the snail is climbing down d centimeter. Okay, ये हो गया रात के समय पर. So the net distance covered in one day, okay, is essentially u minus d. यानी कि 24 घंटे के सिलसिले में u minus d है. So 10 days में the net distance will be 10 into u minus d. तो let's assume कि वो let's say 2 मीटर आगे चल रहा है और यहाँ पर 1 मीटर नीचे जाता है, तो it will be 10 2 it minus 1 1, तो ये हो जाएगा 10 meters, right? I'm just giving you an example to make it easy for you to understand, right? So what can we say if the snail's movement is d is greater than u, यानी कि जितना वो स्लिप हो रहा है वो जितना ऊपर जा रहा है उससे ज्यादा है, यानी कि वो स्लिप ज्यादा हो रहा है, ऊपर कम चढ़ रहा है. तो अगर ये होगा, what can we say about the snail's movement if d is greater than u? So अगर d is greater than u, that means वो स्लिप ज्यादा हो रहा है, वो कभी भी ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो जितना ऊपर जा रहा है उससे कहीं ज्यादा. लेट्स एज्यूम कि u is equal to 5 meters, okay, and d is equal to 10 meters. तो अगर वो 5 meters ऊपर जाता है लेकिन वो नीचे वापस 10 मीटर चला जाता है, तो अगले दिन वो वापस उसी जगह पर पहुंच जाएगा, फिर वो नीचे और 10 मीटर नीचे चला जाएगा, तो नीचे नीचे ही जाता रहेगा, ऊपर पहुंचेगा ही नहीं. समझ में आ गई बात? सो एवरीथिंग ट्राई टू मैथ्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन अलजेब्रा, टू एन एक्सटेंट इवन इन ज्योमेट्री, बट अलजेब्रा पर्टिकुलरली, कि आप हर चीज को आप एक तरह से लॉजिकली देखें. ओके, लॉजिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड विद डिजिट्स whether you are understanding it. Please do that, because otherwise maths में number कटते हैं. You have to be very careful. I have suffered when I was in class 5, 7, 8 वगैरह by having a very bad and a very strict maths teacher, जिससे कि पूछने से ही डर लगता था, right? तो उससे क्या होता था, वो self confidence which you otherwise have a very logical mind, your self confidence goes for a toss. And thank God for an uncle in my neighborhood who used to teach me. God bless his soul. He's no more now, but उससे उनसे पढ़ने से काफी मदद मिली, because he would explain it in very very simple kind of terms, whereas there are some teachers who terrorize you with maths. Maths से वैसे ही डर लगता है, इससे और भी ज्यादा डर लगता है. So that's why I'm trying to simplify it, explain it in a logical and commonsensical manner. अगला क्वेश्चन पे चलते हैं. Radha is preparing for a cycling race and practices daily. हर रोज प्रैक्टिस करती है because उसको साइकिलिंग की दौड़ में भाग लेना है. The first week she cycles 5 kilometers every day. पहले हफ्ते यानी कि 7 दिन, हमेशा याद रखो जब भी वीक या मंथ की बात करें, अब देख ले, ओ वीक मतलब 7 दिन, माइंड में सोच ले. 5 किलोमीटर, बिकॉज यहां पर एवरीडे लिखा है तो दिन का हिसाब करना पड़ेगा. एवरी वीक शी इंक्रीजेस द डेली डिस्टेंस साइकिल बाय z किलोमीटर. तो यानी कि हर हफ्ते, पहले हफ्ते अगर वो 5 किलोमीटर हर दिन चलती है, राइट, यानी कि 5 किलोमीटर इंटू 7 इक्वल्स 35 किलोमीटर, लेकिन वो हर हफ्ते वो डेली डिस्टेंस को z किलोमीटर से इंक्रीज करती है. सो हाउ मेनी किलोमीटर्स वुड राधा हैव साइकिल्ड आफ्टर 3 वीक्स, कि 3 हफ्तों बाद कितने किलोमीटर उसने साइकिलिंग की होगी. ओके, तो इसको यहां पर ऐसे करते हैं, इसको यहां पर करते हैं. तो पहले हफ्ते देखिए, राधा इज प्रिपेयरिंग फॉर अ साइक्लिंग रेस एंड प्रैक्टिसेस डेली. द फर्स्ट वीक शी साइकिल्स 5 किलोमीटर्स डेली. सो फर्स्ट वीक में इट इज 5 किलोमीटर्स इनटू 7 डेज, यानी कि जैसे मैंने कहा 35 किलोमीटर्स इन द फर्स्ट वीक. ये वीक नंबर 1 हुआ. ओके, इस तरह से लिखिए. ओके, वीक 2 में क्या कर रही है? इन द सेकेंड वीक व्हाट इज शी डूइंग? शी इज साइक्लिंग 5 plus z, because she is increasing it by z kilometer every day. She increases the daily distance cycle by z kilometer. तो 5 plus 7 every day. So इसका मतलब हुआ 5 plus 7 into 35 into 7, यानी कि 35 plus 7z is what she would have cycled in week 2. अब यहां पर थर्ड वीक में आते हैं. तो थर्ड वीक में क्या हुआ? 5 plus z हुआ, ओके, प्लस z हुआ, बिकॉज और तीसरे हफ्ते भी इंक्रीज करेगी. तो इसका मतलब हुआ ये 5 plus 2z हो गया. ओके, 5 plus 2z
अब इसको यहां पर आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका 35 प्लस 14z। यस और नो, राइट, इन द थर्ड वीक। अब इस सभी को आपको कैलकुलेट करना है, बिकॉज दे हैव आस्क्ड यू हाउ मेनी किलोमीटर्स वुड राधा हैव साइकिल्ड आफ्टर 3 वीक्स। तो वीक 1, वीक 2 और वीक 3 दोनों को, तीनों को हमको वी हैव टू एड अप, राइट। सो इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो पहले वीक में क्या था, 35 किलोमीटर्स था। दूसरे वीक में क्या था, 35 प्लस 7z। तीसरे में क्या था, 35 प्लस 14z। अब इसको 35 35 35 तीनों को आप कर सकते हैं, ये हो गया आपका 105, और ये 7z प्लस 14z ये हो गया आपका 21z। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। इज दिस क्लियर, यस और नो? ग्रेट, let's go back to the question. Now, in the following figure, observe how the expression w plus 2 becomes 4w plus 20 along one path. Okay, ये आपको सॉल्व करके दिया हुआ है, तो आपसे पूछा जा रहा है ये 4w plus 20 कैसे हुआ कैसे? तो w plus 2, okay, तो w प्लस 2, ओके, ये w प्लस 2 है, इसमें आपने 3 ऐड किया तो ये हो गया w प्लस 5। ओके, w प्लस 5 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपका 4w, 4 इंटू 5 हो जाएगा आपका 20। सो ये सोल्यूशन आपको मिलता है। अभी हम दूसरा करते हैं। अब ये वाला, एक्चुअली ये वाला यहां पर गलत दिया हुआ है। ओके, सो w प्लस 2 प्लस 3, करेक्ट, तो सेम हो गया w प्लस 5। इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये भी आपका 4w प्लस 20 होगा। ये ओरिजिनल प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। अब यहां पर लेफ्ट साइड पे देखते हैं, w प्लस 2 माइनस 5। ओके, w प्लस 2 माइनस 5, तो इसका माइनस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3, बिकॉज माइनस 5 प्लस 2 तो माइनस 3 का साइन। सो w माइनस 3, w माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3w माइनस 9, माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9। क्लियर, ये वाला करते हैं। अभी इसके लिए इजी होगा, w प्लस 2 और उसको 8 के साथ ऐड करना है तो ये हो जाएगा आपका w माइनस 6, राइट। अब w माइनस 6 को माइनस 4 के साथ आपको देखना है, राइट, तो ये हो जाएगा आपका w तो वो ही रहेगा, और माइनस 4 और माइनस 6 ये हो जाएगा आपका माइनस 10। इज दिस क्लियर? नो कंफ्यूजन, राइट। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि ये इंटू साइन है या माइनस साइन है या प्लस साइन है, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, ए लोकल ट्रेन फ्रॉम यहापुर टू वहापुर, यहां से वहां, गाने, ये पुराना एक अशोक कुमार का गाना होता था। ओके, यहां से वहां, यहां से वहां, तो यहापुर से वहापुर की तरफ जा रहा है। ओके, इट स्टॉप्स एट 3 stations at equal distances along the way. The time taken in minutes to travel from one station to the next station is the same and is denoted by t. The train stops for 2 minutes at each of the 3 stations. So अगर t, okay, तो समय जो टाइम लगा रहा है, अगर वो 4 है तो व्हाट इज द टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम यहापुर टू वहापुर, यहां से वहां जाने के लिए कितना समय लगेगा, यहां पर करते हैं। टेक इट टू द नेक्स्ट पेज, प्रैक्टिस पेज। तो यहां पर द ट्रेन फ्रॉम यहापुर टू वहापुर स्टॉप्स एट 3 स्टेशन। तो यहां पर ये अगर यहापुर है तो यहां पर एक स्टेशन है, यहां पर दूसरा स्टेशन है, यहां पर तीसरा स्टेशन है, और ये हो गया आपका वहापुर। ओके, ये आपका यहापुर है, स्टेशन नंबर 1, स्टेशन नंबर 2, स्टेशन नंबर 3। और हर जगह आपका कहां कितने मिनट के लिए रुक रहा है, 2 मिनट के लिए। जो भी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में दिया हो उसको आप हमेशा पहले प्रेजेंट करके लिख लीजिए, ताकि आप कोई भी गलती ना करें। यू डोंट मेक ए मिस्टेक विद बेसिक कैलकुलेशन। सो आई एम लुकिंग एट द बुक एंड आई एम राइटिंग डाउन द इंफॉर्मेशन व्हिच इज अवेलेबल। नाउ इट स्टॉप्स फॉर 2 minutes एट एवरी station. Now, what is the thing? A local train travels at equal distance. The time taken to one station is same. So it stops at 2 minutes at each of the 3 stations. So t is equal to 4. Okay. So total time taken in traveling is given as 4t, right? T is equal to 4. So there were 4t, right?
So so time taken in traveling will be 4 into 4 equals 16 minutes. Okay, because 1, 2, 3, 4, right? So it will be 16 minutes. Sorry, 1, 2, 3, and 4. So it will be 16 minutes. Now time taken during stoppages, हर जगह कितने मिनट रुक रहा है? 2 मिनट. तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 2 मिनट यहाँ, 2 मिनट यहाँ, 2 मिनट यहाँ. तो 16 प्लस 6 मिनट्स. ओके, तो ये हो जाएगा आपका 22 मिनट्स के बाद वो यहांपुर से लेकर वहांपुर तक जाने के लिए उसको 22 मिनट का समय लगेगा. राइट? सो दैट इज द वे. तो इसका ऑल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? यहां पर आपसे व्हाट इज द ऑल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी पूछा है फॉर टाइम टेकन टू दिस थिंग. तो इसके लिए आप रफ डायग्राम बना सकते हैं. राइट? तो रफ डायग्राम बनाने के बाद तो इट विल बी 4t plus 6. Okay, that is, this is 2 into 3. 4t plus 2 into 3, that is 6. This is the expression. अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं. सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग ऑल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. ओके, यहाँ आपके पास किताब है तो मैं सीधा यहाँ पे कर देता हूं. मैं अपनी किताब यहाँ पर खोल देता हूं और यहाँ पर लिख देता हूं. पहला वाला है 3a plus 9b. फर्स्ट वन इज 3a plus 9b minus 6 plus 8a minus 4b minus 7a plus 16. Okay, this is the first wala expression. Right? Now how do you simplify it? What did we learn earlier? That you need to जो भी a है इन तीनों को आप एक साथ लगा लेंगे. सो ये हो जाएगा 3a plus 8a minus 7a. करेक्ट? 3a plus 8a minus 7a. उसके बाद क्या करेंगे? 9b minus 4b. यहां पे तो नहीं है. उसके बाद आप क्या करेंगे? प्लस minus 6 plus 16. तो ये तो हो गया आपका 10. ये हो गया आपका 5b. ये हो गया 11 minus 7. ये हो गया 4a. 3a था ना? 3a plus 8a. तो ये हो गया 11a. 11a minus 7a. 4a. तो ये हो जाएगा 4a plus 5b plus 10. This is the first one. Okay. Let's move to the second question. Second question is 3a minus 3b. मेरा पेन स्लिप होता रहता है, so that's a problem with this. 3b minus 8a minus 4b minus 16. Okay. So how do you do this one? So 3a, तो यहां पर 3 और 3a को मल्टीप्लाई करेंगे. See, I'm doing this. I would want you to, the best solution is what? कि आप वीडियो को पॉज करें, आप खुद सॉल्व करें and then match it with the way I'm doing it. Because see, I could have just written it out, टाइप करके मैं ला सकता था. Okay, जैसे मैंने 6th क्लास में किया था. बट मुझे लगता है कि आपके सामने मैं सॉल्व करूंगा तो you will feel like okay, we are doing it together. Okay, that's why I'm doing it together. Otherwise, I could have typed it all out and brought it before and just say कि ऐसा होता है. But I realize उससे ना थोड़ा सा एक डिस्कनेक्ट हो जाता है. So 3 into 3a and 3 into 3b. So 9a minus 9b. Okay, and then minus 8a minus 4b minus 16. तो इसको आपने उसी वे में आपने उसको बिठा दिया. अब 9a और b को एक साथ करते हैं. तो पहला वाला होगा 9a minus 8a. ओके, प्लस minus 9b minus 4b और minus 16. ये minus 16 तो वैसे ही है. तो ये तो हो गया आपका a. ओके, ये आपका हो गया a. ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये दोनों मिला के ये हो जाएगा 13b minus 16. Okay, 13b minus 16. I hope you can follow my handwriting. My handwriting, as I said, ये पेन ना स्लिप होता रहता है, so उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आती है. Let's look at the third one. Third one is 2x minus 3 plus 8x plus 12. Okay, तो पहले we have to do this 4x minus 6 plus 8x plus 12. Okay, 8x plus 12. तो 4x plus 8x, 4x plus 8x और ये हो जाएगा आपका minus 6 plus 12. तो ये तो हो गया plus 6, ये हो गया 12x. So 12x plus 6. Okay. Let's go to the fourth one. Fourth one, D is 8x minus 2x
-3 + 12. Okay, now इसमें what, how will you do this thing? So 8x - 2x, okay, 8x - 2x ये सीधा हो गया आपका 6x - 3 + 12. तो यहां पर माइनस और माइनस हुआ तो ये प्लस हो गया, so this will become 50. Clear? Next one, E, 8h - 5 + 7h + 9. ये h है. Okay, so 8h - 5, so 8h माइनस से ये माइनस हो जाएगा तो 7h, 8h - 7h, उसके बाद प्लस -5 + 9, सो ये हो जाएगा आपका 8h - that is 1h or just h, and this will be 4. Okay, h + 4. Let's move to the next one, sixth one, last one is 23 + 4. अभी मुश्किल वाला आया नहीं है, दिल थाम कर बैठिए. 4 6m - 3n - 8n, बाप रे कितना लंबा है, 3m - 18. ओके, तो इसको कैसे करना है? सो 23, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं. 23 4 × 6 दैट इज 24m - 12n - 8n - 3m - 18. तो इसमें क्या करेंगे? पहले 23 - 18 कर लेते हैं, प्लस 24m - 3m प्लस -12n - 8n. Okay, is this clear? So 23 - 18 5 plus 24 - 3 21m प्लस -12n - 8n, तो ये हो जाएगा आपका -20n. ये माइनस का साइन हो जाएगा. ओके, I hope you were also able to solve the 6 questions successfully. Okay, let's move to the next one. Now add the expressions, और अरे बाप रे कितने सारे हैं यार. Add the expressions given below, तो ये वाला भी solve कर देते हैं. Okay, I will do it along with you so that it's easy for you. तो इसका पहला वाला देखते हैं. 4d - 7c + 9 + 8c - 11 + 9d. ओके, तो इसमें कितना होता है? 4d - 7c + 9, तो 4d और 9d को ऐड करेंगे 13d हो गया. फिर -7c और 8c को करेंगे तो +c हो जाएगा, और 9 और -11 करेंगे तो ये -2 हो जाएगा. इज दिस क्लियर? दूसरा है -6f + 19 - 8s प्लस -23 + 13f + 12s. तो ये हो जाएगा आपका 19 और 23 गया तो ये -4 हो गया. आई एम जस्ट डूइंग इट फास्ट. -8 और ये हो गया 4s. 13f और इसमें गया, ये हो गया आपका 7f. ठीक है या नहीं? 7f प्लस, इसको आप इस तरह से सीख सकते हैं, 7f + 4s - 4, इस तरह से, so that it's easy to understand. तीसरा कौन सा है? 8d. Should I do all of them or do you want me to leave some for you to do? मैं 3 एक कर देता हूं, उसके बाद आप नेक्स्ट वाले आप कर लीजिए. ओके, प्लस 16c - 11 + 9d. ओके, इसको कैसे करेंगे? तो ये वाला आप कैसे करेंगे? 8d - 4c हो गया. ओके, तो इसको आप ओपन अप कर लीजिए. 16c - 11 - 9d हो जाएगा. ओके, तो नाउ यू विल डू 8d - 9d प्लस 9 - 11 प्लस -14c plus 16c. Okay, so then it will become -1d - 2 plus 2c. Okay, so that means 2c minus d minus 2. Okay, now question number D, E and F I'm going to leave it to you. Okay, आप कर सकते हैं. I'm sure you'll be able to do that because काफी लंबा वीडियो बन जाएगा नहीं तो. Okay, subtract the equation. इसमें मैं एक कर देता हूं and then you will do the rest. सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं. तो पहला वाला है
फ्रॉम, तो वो फ्रॉम कहां से करना है, तो पहले 6a करेंगे प्लस 9b माइनस 18 माइनस 9a माइनस 6b प्लस 14। ओके, सो यहां पर आपको ये ब्रैकेट में दोनों डालने पड़ेंगे, राइट। तो इसमें क्या होगा, 6a माइनस 9a, 6a माइनस 9a, ओके, 6a माइनस 9a हो जाएगा। उसके बाद 9b माइनस 6b, नो ये प्लस 6b हो जाएगा बिकॉज माइनस और माइनस हो जाएगा, और यहां पर माइनस 18 माइनस 14। ओके, तो यहां पर ये हो जाएगा माइनस 3a प्लस 15b, और ये माइनस माइनस साइन हो रहा है तो ये हो जाएगा 18 प्लस 14 माइनस 32। ओके, माइनस 32 प्लस 15b माइनस 30। ओके, आई होप यू कैन डू दिस, जिसमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, दैट यू हैव टू सबट्रैक्ट, ये फ्रॉम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको पहले लगाना है और इसमें से इसको माइनस करना है, दैट इज फ्रॉम द सेकेंड वन, लाइक इसमें से इसको माइनस करना है, इस बात का ध्यान रखिए। ओके, डिस्क्राइब सिचुएशंस करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग algebraic expressions। अब ये 8x और 3y का क्या मतलब हुआ, सिंपल सी है, बिकॉज देयर आर टू आइटम्स, x इज डिफरेंट फ्रॉम y, तो यानी कि एक पर्टिकुलर सब्जी वाला है हु इज सेइंग दैट मेरा एक किलो आलू, आलू 8 रुपए में कहां बिकेगा, मैं धनिया 8 रुपए में बेचता हूं और कड़ू पत्ता I will sell at 3 rupees a piece, right? So it is two different expressions that he is talking about. 15x minus 2x. Now इसमें देखिए कि दोनों का एक ही प्रोडक्ट की बात हो रही है. So you can say that I have, let's say, 15 boxes of watermelon. Okay, watermelon. उसमें से 2 बॉक्स मैंने बेच दिए अभी, that means I have 13x boxes of watermelon still left, right? So that can be one expression. Now imagine a straight rope. If it is cut once as shown in the picture, we get 2 pieces. If the rope is folded once and then cut as shown, we get 3 pieces. Now if you see this pattern, ये एक रस्सी है, इसको आप बीच में से काटते हैं तो आपको 2 पीसेस मिलते हैं। इसको इस तरह से एक यू शेप में डालेंगे और उसको फिर से बीच में से काटेंगे तो ये एक मिलेगा, ये दूसरा पीस, ये तीसरा पीस। ऑफ कोर्स तीनों का लेंथ अलग अलग है, बट 3 पीसेस मिलेंगे। अगर आप इसके 2 बेंड बनाते हैं और फिर आप काटते हैं तो पीस नंबर 1, पीस नंबर 2, पीस नंबर 3 और पीस नंबर 4। ओके, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग स्पोकन अबाउट। तो यहां पर आप क्या करेंगे, तो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन अगेन इन द टेक्स्ट बुक। तो यहां पर व्हाट यू आर सेइंग, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस इफ द रोप इज फोल्डेड 10 टाइम्स एंड कट। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ पीसेस व्हेन द रोप इज फोल्डेड r टाइम्स एंड कट। तो 0 फोल्ड, दैट इज पहला वाला इसमें जिसमें कि फोल्ड नहीं है, उसको आप काटते हैं तो आपको 2 पीसेस मिलते हैं। तो स्टेप 1 where there is 0 fold, right, we are getting 0 plus 2 equal 2 pieces. Okay, then we are talking about 1 fold. Okay, when we are talking the step 2, when we are talking 1 fold, so we are getting 1 plus 2, that is 3 pieces. Okay, then step 3 is when we are having 2 folds, we are getting 2 folds, we are getting 2 plus 2 equals 4 pieces, right? In the same way, if the rope is folded 10 times, okay, 10 folds, so this will become 10 plus 2 equals 12 pieces. Is this clear? So isme, if we are to say the rope is folded, when the rope is folded r times and cut, so this will become r plus 2. Jitna bhi number hai, 20 times hai, 20 plus 2. Okay, now the next question that we have to look at is, look at the matchstick pattern below. Observe and identify the pattern. How many matchsticks are required to make 10 such squares? How many are required to make W squares? Okay, तो इसको जरा देखते हैं। अपने बुक को खोल के रखो। I have opened my book here and I'm looking at it. Now look at the matchstick. Now if you see the step 1, to make 1 square we need 4 matchstick, because एक matchstick ये, दूसरा matchstick ये, तीसरा ये, चौथा ये. So 1, 2, 3, 4. So step 1 के लिए we are needing 4 matchsticks. To make 2 squares, we need what? To make 2 squares, we will be needing 4 plus 2 minus 1 into 3. Okay, because what we are saying, step 2, to make 2 squares. So 2 squares में से
एक को माइनस करेंगे, राइट, बिकॉज वी आर गोइंग टू एड वन आउट हियर, राइट, बट वी आर एडिंग माइनसिंग वन बिकॉज वी नीड वन मैचस्टिक लेस into 3. So here it will be 4 plus 2 minus 1 into 3. Similarly for 3 squares, so अगर 3 squares अगर करना है, जैसे ये 3 squares है, so it will be equal to 4 plus like 3 plus 3. Okay, 3 plus 3 equals 10 squares. If you count the thing, you will find that it is 10 squares. So making w squares के लिए क्या होगा? The formula will be 4 into 4 plus 3w minus 1. So it will be 4 plus 3w minus 3. Okay, 3 into minus 1 minus 3. So this will become 3w plus 1 matchsticks. Okay, so 3w plus 1 matchsticks. So making 10 squares, अगर 10 squares को बनाना है, so 10 squares को बनाना है, so 3w, that is 3 into 10. Okay, 3 into 10 plus 1, which will become 31 matchsticks. That is 3 into that. The original formula will be 4 plus 10 minus 1 into 3. So 4 plus 9 into 3. This is 27 into plus 4 equals 31. So दोनों से आप देखेंगे, you will get the same solution. Is this clear? That you what you are talking about, जितने स्क्वायर चाहिए उसमें से एक को माइनस करो and उसको 3 से मल्टीप्लाई करो and then you add 4 to it and you will get, otherwise you do it with the 3w plus 1 formula, you will get the same solution of 31. Okay, now let's get into 3 complicated questions. Okay, have you noticed how the colors change? Actually 12, 13, 14 तीनों के तीनों ही 14 और 15 तक है, सॉरी 12, 13, 14, 15 चारों के चारों कॉम्प्लिकेटेड है. ओके, इसमें मैंने एक और जगह पे इसको नोट करके रखा है. इसको मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा. Have you noticed how the colors change in a traffic signal? Now, if you have stopped at a traffic signal, you would have seen कि आप देखेंगे अगर रेड लाइट है, ओके, रेड लाइट से ग्रीन लाइट होने के लिए नॉर्मल एक गुड ट्रैफिक लाइट में क्या होता है कि रेड लाइट हो रहा है, उसके बाद बीच में इट विल गिव यू एन येलो लाइट ऑफ 2 seconds और 3 seconds कि आपकी शुरू होने वाली है. ओके, तो येलो फिर ग्रीन के बाद भी आपके पास कि ग्रीन खत्म हो रही है, आप जाना अभी स्लो डाउन कर लीजिए, रोक दीजिए के लिए 2 या 3 सेकंड के लिए येलो लाइट, जिसको कि एम्बर लाइट भी कहते हैं, और उसके बाद रेड लाइट पे आती है. ओके, तो यानी कि हर चीज के बीच में एक येलो लाइट आती है, येलो लाइट या एम्बर लाइट, राइट. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग स्पोकन अबाउट हियर. सो द नंबर 4, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये वाला जो है, तो द सेम पैटर्न रिपीट होने के लिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, उसके बाद 5वें नंबर पे यानी कि 1 गेट्स रिपीटेड एट नंबर 5, यानी कि देयर इज अ नंबर 4 is used because the entire pattern of जो ट्रैफिक लाइट्स है is a cycle of 4 colors, यानी कि रेड, येलो, ग्रीन, येलो, उसके बाद अब इसके बाद नेक्स्ट येलो होगा, उसके बाद ग्रीन होगा, उसके बाद येलो होगा, उसके बाद ही रेड होगा. तो अगेन देयर विल बी ए पैटर्न ऑफ 4 कलर्स. सो देयर इज 4 कलर्स एंड उसके बाद ही पैटर्न रिपीट हो रहा है. ये समझ में आ गया? ध्यान से सुनो, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड, तो ध्यान से सुनो. ओके, सो द साइकिल ऑफ 4 इज रेड, येलो, ग्रीन, येलो, रेड, yellow, green, yellow, red, right? So after the 4th light, it goes back to red. So because the pattern length is 4, okay, we use this number 4 to figure everything out. Okay, so we divide by 4 to see we are inside that repeating block. So the formula for red would be 4n, okay, minus 3, okay, 4n, और यहां पर 1, 2, 3. So it will be 4n minus 3. Formula for green will be 4n minus 1, or because both use 4 because their positions are tied to the this kind of a 4 this thing cycle. So अगर मैं आपको और भी सिंपल भाषा में समझाऊं, so येलो लाइट कौन सी पोजीशन पर, इस तरह से समझो ज्यादा आसानी होगी. येलो लाइट इज एट 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 क्या होते हैं? मल्टीपल्स ऑफ 2, राइट? तो यानी कि ये हो गया आपका n पोजीशन. ये सारे इवन नंबर्स हैं. ओके, तो अगर n 1 है, ओके, तो आपको
यू गेट 2, N2 है तो 4 मिलेगा, N3 है तो 6 मिलेगा, यानी कि ये सभी के सभी क्या होंगे, येलो लाइट होंगे, राइट। तो अगर हम इसको वी अप्लाई द रूल, इफ वी अप्लाई द रूल टू 90 जो आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में जो पूछा गया ना 90, 190 और 343 के बारे में पूछा गया है, राइट। 90 और 190 क्या है, इवन नंबर्स, तो यानी कि दोनों के दोनों ही येलो लाइट होंगे। सिंपल, ये ज्यादा आसान हो जाता है, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं। अब हम चलते हैं ग्रीन लाइट की तरफ। अब ग्रीन लाइट कौन सी पोजीशन पर है, ग्रीन लाइट पोजीशन पर है 3, 7, 11, 15। ओके, दैट इज द थिंग ना, 3 पोजीशन पर है, फिर 7 पर है, फिर 11 पर है। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू डिवाइड इट बाय 4? फॉर एग्जांपल, अगर आप 7 को 4 के साथ आप डिवाइड करते हैं, राइट, आपको क्या मिलता है, 7 ऑब्वियसली ओनली 1 एंड देन देयर इज अ रिमाइंडर ऑफ 2 ऑफ 3, करेक्ट। 7 को अगर आप इसको करेंगे 4, रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा, राइट। 11 को आप 4 से कीजिए, 11 को आप 4 से कीजिए, 4 इंटू 8 8, रिमाइंडर बचा 3, राइट। सो ऑल ग्रीन लाइट पोजीशंस व्हेन डिवाइडेड बाय 4 गिव ए रिमाइंडर ऑफ 3, राइट। सो द बुक का फॉर्मूला 4 9 minus 1 is a mathematical way, is basically what you're saying that it leaves a remainder of 3, right? So अगर n equals 2, 4 into 2 1 is 7, तो 7 has a remainder of 3, 11 का भी remainder of 3 है। तो अब हम इसको यूज करते हैं 343 के ऊपर। 343 को अगर आपको 4 के साथ डिवाइड करना है, राइट, तो 4 के साथ डिवाइड करेंगे, सीधा डिवाइड नहीं होता है। 343 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना होगा, 4 इंटू 3 8, ये हो गया आपका 8, सॉरी 2 23 4 5, राइट, तो ये हो गया आपका 85, 23 20 और रिमाइंडर बचा 3। तो इसका मतलब है ये 343 पे आपका होगा ग्रीन लाइट। इज दिस क्लियर, राइट। रेड लाइट का भी मैं समझा देता हूं ना। बुक ऑब्जर्वेशन, आई मीन जो हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि बुक में जो दिया है, रेड लाइट इज एट नंबर 5, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 9, नंबर 13 एटसेट्रा। ओके, हर 4 पोजीशंस पे रेड लाइट आ रहा है। तो यहां पर क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स 1। सिमिलरली 9 डिवाइडेड बाय 4, ओके, उसको भी आपको 1 मिलेगा, राइट। 9 डिवाइडेड बाय 4 ऑल्सो यू विल गेट 1 ना, 4 9, इसको करेंगे तो ये हो गया आपका 8, रिमाइंडर हो जाएगा आपका 1। सो द बुक फॉर्मूला इज आपका 4 9 माइनस 3। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि 90 और 190 पे आपका येलो और 343 पे आपका ग्रीन लाइट आएगा। अगर आपका कहीं पर रिमाइंडर 1 आता, सो दैट वुड हैव बीन अ रेड लाइट। ओके, सो दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। सो एन जो है वो बेसिकली वो काउंटिंग नंबर के लिए डिनोट करता है। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, मैंने एक इजी सॉल्यूशन लिख के रखा था। हाँ, इसका एक और तरीका है, ये जो इफ एनी वन ऑफ यू इज गेटिंग कंफ्यूज विद दिस 4n minus 1 and 4n minus 3, ओके, ये कैसे आया करके, ओके, आई थॉट अबाउट इट एंड ट्राई टू सिंप्लीफाई इट फर्दर। थिंक अबाउट अ क्लॉक, ओके, जिसमें सिर्फ 4 घंटे हैं, ओके, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट यू नाउ डू इज ये 1 2 3 4, नाउ ये हो गया आपका 4n, ओके। अब इसमें से 4n माइनस 1 को यहां पर ड्रॉप करेंगे, ओके, 4n माइनस 1 करेंगे तो क्या आता है 3, तो यहां पर आप आ जाएंगे। 4n माइनस 3 करेंगे तो आपका यहां पर आ जाएगा 4n माइनस 3 equals 1. So this is another way of also reassessing that, because I don't want you to get confused. तो अगर आप सोचे ये क्लॉक के बारे में सोचे and you think of 4n minus 1 you reach 3, 4n minus 3 you reach 1. That's another way of
क्रॉस चेकिंग कि आपने आंसर सही सोचा है या नहीं. ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि है स्क्वायर्स के बारे में. ऑब्जर्व द पैटर्न बिलो, हाउ मेनी स्क्वायर्स विल बी देयर इन स्टेप 4, स्टेप 10 एंड स्टेप 50. अब ये बेसिक फंडा क्या है, यहां पर स्क्वायर्स दिए गए हैं, काफी सारे स्क्वायर्स दिए गए हैं. सो नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन स्टेप 1, ओके, इज इक्वल 5. ओके, 1 1 2 3 4 5, राइट. सिमिलरली स्टेप 2 में कितने हैं, 5 प्लस 4, यहां पर 9 है. स्टेप 3 में कितने हैं, 13 स्क्वायर्स हैं. 4 में कितने होंगे, 17 होंगे. 10 में कितने होंगे, 41 होंगे. 50 में कितने होंगे, 201 होंगे. अब ये कैसे आया ये मैं बताता हूं. तो जनरल फॉर्मूला इसका ये है, इसका जनरल फॉर्मूला इज दैट स्टेप 1 में देयर इज 1 सेंटर स्क्वायर एंड 4 आर्म्स. ओके, ये चारों तरफ 4 हाथ हैं. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, तो इट इज 1 प्लस 4 इंटू 1. ओके, यानी कि 5 स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला. ओके, स्टेप 2 में कितने हैं, इट इज 1 प्लस 4 इंटू 2. 4 into 2. So this becomes 9. Okay. Similarly, 4 into 3. So the pattern is that the step number is always the same as the number of squares in each arm. So इसका formula क्या होगा, 1 plus 4 into n. Okay. So that means 4 n plus 1. This is the फॉर्मूला. तो अगर आप इस फॉर्मूले को अगर आप यूज करेंगे, सो इफ यू यूज द फॉर्मूला 4n plus 1, 4n plus 1, so it will be 4. स्टेप 4 के लिए कौन कौन से स्टेप्स के लिए यूज करना है, स्टेप 4 ना. स्टेप 4 will be 4 into 4 plus 1 equals 70. Is this clear? स्टेप नेक्स्ट कितना है, स्टेप 10. So it will be 4 into 10 plus 1, that is 41. नेक्स्ट वन कितना है, स्टेप 50 के लिए पूछा है. स्टेप 50 is 4 into 50 plus 1, यानी कि 200 plus 1, 201. Okay, so this is how they are to do. Next question is, how would the formula change if you want to count the number of vertices of all the squares? Now every single square has 4 vertices. Okay, यानी कि 4 corners. Vertices मतलब corners. So we already have a formula to count how many squares are in each step. वो कौन सा है, 4n plus 1. So नया फॉर्मूला क्या होगा, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. That will become 4n plus 1 into 4. Okay, 4n plus 1 into 4 will become 16n plus 4. This will be the formula for making counting the number of vertices, यानी कि corners कितने हैं. Okay, let's now come to question number 15, जो कि आखिरी क्वेश्चन है आपके फिगर इट आउट का. Okay, so यहां पर दिया गया है 4 कॉलम्स, 1 2 3 4, and this is row number 1, row number 1, row number 2, row number 3, row number 4, row number 5. Okay, so यहां पर आपसे पूछा गया है कि give expressions to generate all the numbers in a given column 1 2 3 4. So how would you do that? Okay, I'll look at the book and here. So expression in by which you will do that. So if R is your row number, okay, R is your row number. So what you need to do is to say the number which will be in the rth row of column 1 will essentially be, because there are 4, right? Because यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 5 5 plus 4 9 9 plus 4 13 13 plus 4 यहाँ पर 17 आएगा, उसके बाद नीचे यहाँ पर 21 आएगा. So there is a difference of 4 here. Okay, so it will be 4 into, जैसे हमने पहले किया था, r minus 1 plus 1. Okay, so that makes it 1. Okay, similarly 4 into r minus 2 plus 2 equals 6. I will show it to you here. तो यहां पर देख रहे हैं ना, पहले 1 है. Okay, 4 into r minus 1. r is 1, row is 1. 4 into r is 1 out here, minus 1 0 plus 1. So 4 into 0, 4 into 0 0, 0 plus 1 equals 1. So यहां पर हमको 1 मिला. अब यहां पर देखिए 4 into दूसरा कौन सा है, 6 आ रहा है ना, तो यहां पर 4 into 2 minus 1 plus 1. तो 4 into 1, sorry, 4 into r minus 1 plus 2, sorry, plus 2. तो यहां पर ये हो गया 4 plus 2 equals 6. So similarly 4 into third row,
3 minus 1 plus 3. Okay, so this will be 4 into 2 is 8. 8 plus 3 equals 11. ये आपका तो मिला. एक और करूं. दूसरा 4 into 4 minus 1 plus 4. So 4 minus 1 3. So 12 plus 4 equals 16. ये आपका 16 मिला. Okay, so give expression. So this is the way you express in order to calculate कि आपको कौन सा calculate. Now whether you are able to do that for 124, 147 and 201. Okay, ये आपको करना है. यहाँ पे कर लेते हैं अलग से. यहाँ पे जगह कम है. Okay, तो ये एक मिनट इसको मैं मिटा देता हूं. ओके, नाउ पहला वाला जो है आपका है 124, है ना. सो 124 को जो आपको करना है, सो 124 को सीधा अगर आप 4 के साथ डिवाइड करेंगे आपको मिलता है 31. सो दैट मींस इट्स अ रिमाइंडर ऑफ 0. दैट मींस कि ये सीधा का सीधा आपके इस वाले कॉलम में है, बिकॉज ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 4 में है. 4, 18, 12, 16. तो उसी हिसाब से आपका 124 भी फोर्थ वाले कॉलम में आ जाएगा. क्लियर? नो प्रॉब्लम. नाउ नेक्स्ट वन इज द वन, एंड वो होगा रो नंबर 31 में. रो नंबर 31 में चौथे कॉलम में 124 आपको मिलेगा. आई होप दिस इज क्लियर. द सेकेंड वन इज 147. नाउ 147 when you divide it by 4 equals comes to 36 with a remainder of 3. ओके, है ना. समझ में आ गया ना. 147 को अगर आप 4 के साथ डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 12 27, ये हो गया 36, 24, रिमाइंडर आया 3. अब रिमाइंडर जब 3 आता है तो व्हाट डिड आई टेल यू, दैट इट विल बी द 36 फुल रोज हो जाएंगे और 37th रो. सो दैट मींस इट विल बी इन कॉलम 3, रो नंबर 37. ओके, सो दिस विल बी इन 147 will be in 4 into 36 plus 3, that is 4 into r minus 1 plus 3. We get it will be in the 36th row, 36 plus 1, 37th row, column 3. So 37th row, and it will be in column 3. Okay, column 3. अब तीसरा कौन सा है? 201. 201 पे चलते हैं. 201 को जब 4 के साथ डिवाइड करते हैं, you get 50 with the remainder of 1, right? So that means it is in column 1 and it will be in the 51st column. यानी कि 50 पूरे हो जाएंगे. 200 जो है वो आपका ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, ये चौथा कॉलम है, राइट? तो यहां पर अगर 199, 198, 197 होगा तो ये वाला इसका दूसरा वाला 201 पहले कॉलम में होगा और ये होगा 51st रो में. ये होगा आपका 50वां रो और ये होगा आपका 51st रो. इज दिस क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर. आगे और कुछ है. व्हाट नंबर्स अपीयर इन रो आर एंड रो कॉलम सी? तो अगर आप रो को देखेंगे, सो द नंबर ऑफ फुल रोज अबव आर -1. तो हर रो के पास 4 नंबर हैं, राइट? सो the total numbers in all rows above, कि उससे पहले के कितने होंगे, उस रो में उससे पहले के कितने होंगे. so the number will be, the formula will be 4r minus 1 उससे पहले के रो में, ओके, प्लस द कॉलम नंबर, राइट? सो अगर टेस्ट करना है तो अगर रो 3 कॉलम 3 का देखेंगे तो r is 3, ओके, 4 3 minus 1 एंड कॉलम 3. तो यहां पर आप देखेंगे 4 into 2 8 plus 3 equals 11. तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो हमने कौन सा सोचा था? थर्ड नंबर इन द थर्ड कॉलम. थर्ड नंबर इन द थर्ड कॉलम इज 11. तो वही करेक्ट है. तो इसको हमेशा क्रॉस चेक करने का बेस्ट तरीका यही रहता है कि आप नंबर डाल के उसको देखें. लास्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द पोजीशंस मल्टीपल्स ऑफ 3 का. इसमें भी आप देख सकते हैं 3 6 9 कहां पे आते हैं. यू कैन सी दिस. 3 यहां पर आता है, 6 यहां पर आता है, 9 यहां पर आता है, राइट? सो 12 यहां पर आता है, 15 यहां पर आता है, 18 यहां पर आता है, 21 यहां पर आता है. सो इट कीप्स गोइंग इन अ डायगोनल काइंड ऑफ मेथड. ओके, observe, do you see any pattern in it? List any. That's what I'm saying. So it comes in a diagonal kind of method.
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 20, 32. उस तरह से it will keep going in a diagonal kind of method. With this, we come to the end. Too many questions in this. I hope I've made it a little simple for you to understand. That's why I said, इसके मैंने 2-3 तरीके बताए, but I personally think that the clock method will work the best. ऐसा करके ऐसा करो. Okay, so if you do it like that, you will really be able to क्रॉस चेक कि आपने सही तरीके से सॉल्व किया है या नहीं. इसकी जितनी प्रैक्टिस करो उतना ही बेहतर होगा. तो प्लीज एंश्योर दैट यू प्रैक्टिस विद मेनी मोर क्वेश्चंस ऑन दिस. उससे आपको काफी मदद मिलेगी. टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार.